So good evening and welcome. Welcome to the first Wednesday meet of the year 2025. So very happy and prosperous new year wishes to all of you. So welcome to the session. And today we are going to discuss on your life. Your life means the life of a seeker. And some questions, some queries are very important for a true seeker. So we're going to inquire into that. So that is the topic for today. How many of you are excited to hear the topic? Yeah, because all of you have questions, all of you have queries. So what is the difference between a question and a query? पहले तो ये पूछ लेते हैं. क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, सवाल पूछो जवाब मिल गया, खत्म. लेकिन जब एक क्वेरी होती है, यू इंक्वायर इनटू इट, यू ड्वेल इन इट, यू स्टे विद दैट क्वेरी फॉर मे बी days or weeks or months, and then something like an insight comes to you, and that is transforming. That is transforming. That is like, it's like magic. So that is the power of inquiring into any aspect of life. But here we are talking of spirituality, right? So the topic says 3 queries of a true seeker. And I'm sure all of you are true seekers, otherwise you won't be here. Yes. So the 3 queries. So what could be the first query? Anybody who wants to share? The first query of a true seeker, what could that be? The first question that you're going to dwell into, and you're not looking for an answer, you're looking to stay with that question for some time. Please go on mute if there is a disturbance. Yes, Meenakshi, go ahead. So when we come into this journey, the first question is, who am I? Very good. Big round of applause for Meenakshi ji. That is the basic. That is always the beginning. Who am I? And by the way, that is also the end. At the end of the spiritual journey, also you will ask the same question. Only thing is, by that time, your question you would have evolved to such level of consciousness that it will be coming as a declaration. Tarun, I'm putting you on mute. Yeah, there is some disturbance coming. Yeah. So who am I? Very powerful. Yes. तरुण जी कुछ पूछ रहे हैं. No, there is a disturbance coming. मैं भी एक next बता रहा था कि why people look for this, the purpose of the life when they join on the spiritual journey. Yeah, purpose of life. Okay, good. So we'll come to that. But the first question is, who am I? आप हो कौन पता लगेगा, तब आपका पर्पस पता लगेगा ना. पहले पता तो लगा ले हम हैं कौन. So that is always the first question. Who am I? Correct. Now, if I ask that question का आंसर क्या है? अगर वो एक क्वेश्चन होता who am I, तो क्या लिखते आप? I am divine. तो आंसर आ गया सीधा, है ना? I am a soul. मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और उससे रियलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा. It's like a exam, question comes, you write it, you get the marks, nothing changes in your life. Yes. So inquiry means it is something which is going to, in that inquiry itself, you will transform your life. Correct? So Rupa, very good answer actually. I am a soul. आप बोल सकते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ. यस, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ. इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअली लाइफ में. ये सब नॉलेज है जो एक कंसेप्ट बन के हमारे माइंड में बैठा हुआ है. करेक्ट. सो द राइट अप्रोच फॉर दिस इज, दो वी नो द आंसर, now we are going to dwell into this question. So today I'm going to tell you how to dwell into that question. So when you say I am the soul, now you don't have to answer it, you have to arrive at it, you have to discover it, you have to point it out. कैसे करोगे? सबसे पहले I am a soul बोलने से पहले बोलो मैं क्या नहीं हूं. Who I am not. Yes. So first we will look at who I am not. तो आप क्या नहीं हो, पहले तो ये बताओ, फिर हम आएंगे आप क्या हो. जब सब हट जाएगा, जो आप नहीं हो, then you will discover, okay, this is who I am. Is the process okay? Correct? Is the process clear to everybody? Instead of answering who I am, we will say who I am not. And then when you remove whatever you are not, you are left with who you are.
So that is the inquiry that we are going to dwell into, and that is the way you are going to live your life throughout. Every day, every moment you have to inquire into मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ. पहले तो वो देखो. तो let us begin this inquiry. Who I am not. मैं क्या नहीं हूँ, मैं कौन नहीं हूँ. आपको आंखों से जो कुछ दिख रहा है, आपके आंखों से क्या दिख रहा है? बाहर का सिनेरियो दिख रहा है, घर दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, बाकी लोग दिख रहे हैं. So you are seeing human beings, you are seeing living things, living beings. कीड़े मकोड़े भी दिख रहे हैं, जानवर, पक्षी सब दिख रहे हैं आपको, इंसान दिख रहे हैं, वस्तुएं दिख रही हैं. तो बाहर की दुनिया में क्या है? वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति दिख रही है. तो जो कुछ आपको दिख रहा है, क्या आप वो हो? जो आपको दिख रहा है, क्या वो आप हो? इंक्वायर इनटू इट. In what sense are you saying? क्या आपको बाहर दिख रहा है means? वो तो हम हो ही Whatever, नहीं सकते क्योंकि वो तो कुछ और दिख रहा है. whatever is an object of your experience. I'm asking, who are you? So उसके I लिए हम can देख रहे say हैं, who are you not. So stay with this. First understand the journey that we are getting into. First you have to see मैं क्या नहीं हूँ. तो मैं क्या नहीं हूँ? जो मुझे दिख रहा है in the outside world, I cannot be that because it is an object of my experience. And whatever is an object of my experience, I am not that. The first thing that you have to negate is जो मेरे experience में आ रहा है object, वो मैं नहीं हूँ. Slowly you will arrive at what you are. हम उसको ये देख रहे हैं ना, who I am देख रहे हैं ना हम लोग. Correct? So whatever is the object of your experience, I am not that. So this is the first inquiry that you will deal with. और आपके experience में क्या आ रहा है? So you are experiencing this body also. This body called Shashi. I am experiencing that, so I am not the body. क्यों? क्योंकि ये object है मेरे experience का. So if it is an object of my experience, that is not me. Who I am the subject. I जो बोलते हैं, I self क्या है? ये subject है, object नहीं है. तो जो कुछ आपका object है, experience में जो object आ रहा है, वो मैं नहीं हूँ. This is the first differentiation. What does it give you? What will it reveal to you? जैसे आपको लगता है ये मैं नहीं हूँ, ये अगर आपको अवेयरनेस आ गई तो क्या होगा? आपके अटैचमेंट उन चीजों से कम हो जाएगी. यस और नो? We get attached to people, we get attached to things, we get attached to life situations. Why? Because we think it is an extension of us. ये मेरा है, मेरा घर, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार. करेक्ट? अटैचमेंट आ रही है? आ रही है. मेरा बोलने से तुरंत अटैचमेंट आ रही है. तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज ये मैं नहीं हूँ. एंड इफ यू आर नॉट दैट, योर अटैचमेंट comes down. Even when you are inquiring into it, it will make a difference into your level of existence. Yes or no? Yes or no? Yeah. Yeah. So stay with this inquiry. If you're not okay with it, then you should ask question. ठीक है? So the first thing is we say जो भी ऑब्जेक्ट है मेरे एक्सपीरियंस का, वो मैं नहीं हूँ. Fair enough? So I can experience my body also, so I am not the body. Second, ये ग्रॉस है. ये ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं. सटल ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है? And another differentiation is that the outside world is always changing. और जो चेंज हो रहा है, जो पूरे यूनिवर्स में मेरे को दिख रहा है, वो चेंज हो रहा है. तो जो चेंज हो रहा है वो मैं नहीं हूँ. क्यों? मैं कौन हूँ? मैं इटर्नल हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ. यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज भी लेके आओ जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक. मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ. आई एम इटर्नल. हमेशा से था, हूँ और रहूंगा. हाँ. तो जो चेंज हो रहा है वो मैं नहीं हूँ ना. तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक्सपीरियंस का, वो चेंज हो रहा है, तो वो मैं नहीं हूँ. यस. सेकेंड, अब ये ग्रॉस हो गया. सटल पे आ जाते हैं. मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स. क्या मैं ये हूँ?
I have a thought, I have No, an sir. emotion, I have a feeling. Yeah. If you are having it, it is an object, it is an experience. And if it is an object of your experience, you are not that. So I'm not the thought, I'm not the emotion, I'm not the feeling also. Correct? तो वहां से भी थोड़ी सी लेवल ऑफ डिटैचमेंट आ जाएगी. So this has to be real in your experience. So every day, whenever you are caught in a life situation, you should ask. मैं उसमें अगर अटैच हो रहा हूँ किसी चीज में, तो you should ask, मैं ये हूँ क्या? Is that part of me? Part of me वो होगा जिसके बिना आप मर जाओ. If I am that, अगर मैं वो हूँ और वो अगर मुझसे हटा दिया जाए तो मैं मर जाऊँ. I will not exist. मर जाऊंगा means I will not exist in this form, in this life form. Then that is me. For example, breath. Correct? ये Heartbeat. सटल बॉडी बोलते हैं, सटल बॉडी बोलते हैं. लेकिन अगर ब्रेथ नहीं होगी तो आप होंगे क्या? अगर ब्रेथ नहीं होगी तो आप होंगे क्या? नहीं. दैट मीन्स व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी, द प्राण शक्ति जो है आपकी वो खत्म हो जाती है. दैट इज द टाइम व्हेन यू आर नॉट देयर इन दिस लाइफ फॉर्म. यस. So you as a life form cease to exist when there is no breath. So you can say I am the breath. I am the prana shakti. जब तक प्राण शक्ति है शरीर में, Sir, आत्मा even शरीर heartbeat, में, for that matter. प्राण शक्ति is what drives the heartbeat. Prana Shakti is the coordination. Breath is the connection between the body and mind. breath नहीं होगा तो body and mind connected नहीं रहते. इसीलिए the physical body or the gross body falls off and the subtle body goes to the next body. That is the process of rebirth. Correct? Soul की जर्नी ऐसी चलती है ना. Soul तो eternal है. Body will keep coming and going. So the subtle body along with the soul will go to the next body. Correct? तो heart क्या है? Body है. Body का part है ना. The body will fall off when the prana shakti is not there. So what is important is prana shakti. So soul is associated with the prana shakti. जब तक soul शरीर में है, यानी कि आत्मा शरीर में है, यानी कि मैं जो आत्मा हूं वो मैं शरीर में हूं, तो प्राणा शक्ति चल रही है. Get the connection? So you have to understand into this inquiry, वो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता वो मैं. And because of that, the body is functioning. Because of that, the mind is functioning. And because of that, the life is existing. Making sense? Making sense? Now you can understand when you say, who I am, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. Now it makes a lot of, you can say, it gives you a lot of clarity, and it is a very, very important inquiry. Yes? तो कितने लोगों को इस डिस्कशन में थोड़ी सी नॉन अटैचमेंट का एक्सपीरियंस हुआ फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड? तो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना. मेरे को समझ. तो दिस इज एन इंक्वायरी. आई सेड ना, यू हैव टू स्टे विद इट. अगर आपने ये इंक्वायरी अभी तक नहीं करी है तो यू हैव टू ड्वेल इनटू दिस इंक्वायरी, बिकॉज जस्ट नोइंग कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. Yeah. But when you dwell into this inquiry, like, I am not the body, I am not the object of my experience, I am the subject. तो मैं कौन हूं? तब आपको नॉन अटैचमेंट फील हो. That is when you experience non-attachment, and that is when this is going to make a difference in your life. Okay, so let's have some people share. पहला क्वेश्चन का इंक्वायरी यही है. अब ये खत्म नहीं हो जाता. इस टॉपिक के बाद, इस सेशन के बाद आप इसमें इंक्वायर करेंगे और अपनी लाइफ में देखेंगे कि कहाँ आप बॉडी और माइंड से डिटैच या नॉन अटैच हो रहे हैं. देन ओनली यू विल कम इनटू द रेल्म ऑफ द सोल कि मैं आत्मा हूं. ये रियलाइजेशन तब आएगी, वरना एक कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में. ओके, so dwell in it and let's have some more people share. Rupa, do you have any question or is it clear? No questions as such, but just was trying to think and dwell on ki
when the life situation comes, how am I going to react? Like anything in the situation that comes, how am I going to say or relate with that? Okay, I am not going to return that back, or I'm not going to retaliate or keep quiet or grasp that situation and just move away side. किसी को answer नहीं देना, या how I'm just thinking of that. Yeah. So we'll come to that. That's a second part of the discussion. But first thing you have to understand here is that I am a soul playing a role. Yeah. You are a soul and you are playing a role. Other people are also a soul playing a role. Playing a role, So correct. there are no villains. There are no victims. So the best way you can experience yourself as a soul is when you start observing life rather than participate in life. Life में participate करने से पहले observe करो. जब observe कर लोगे, then your participation will be more effective. Yeah. So look into it. I will give you an example, and then then it will become clear to you. But before that, let me come to Vijayji. Vijayji, you raised your hand. यस शशि जी, ये तो समझ में आया शशिधर जी की सोल वाला. देन आई हैव टू सॉरी, आई हैव टू गेट अप, आई वाज हैविंग सम कफ. सो ये प्लेइंग अ रोल कहाँ से आया? अब सोल, आप जो जीवा हो, यू आर ए ट्रायून बीइंग, करेक्ट? बॉडी है, माइंड है, सोल है. अब आपने ये तो देख लिया कि आपने आपको बॉडी और माइंड से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया और आप सोल हैं, ये पता लग गया. बट व्हाट आर यू डूइंग? You are a spiritual being who is here for a human experience, right? How does one infer that? What are you doing there? You are inquiring into it, no? What are you doing here? आप क्या कर रहे हो? देखो, पता लग जाएगा. See, there are two ways of living life. One, you say, I am a physical being who has some spiritual experience sometime. जब मंदिर जाता हूँ या यहाँ जाता हूँ तो मेरे को spiritual experience होता है. Otherwise, I am a perfectly physical being. That is one way of living life. Second way of living life is I am a spiritual being who has come on planet Earth to have human experience. And as a seeker, we know I am a soul who is here for a human experience. So what am I doing? I am playing a role based on my karmas. Why am I born to my parents? Because of karma. So am I playing a role or I have been sent to do a role? You have sent yourself to play that role. और कौन भेजेगा आपको? At the soul level, you have decided to come here, no? Of course, it is governed by the law of karma. So as per the karma, you are born to your parents. 800 करोड़ लोगों में आपने अपने पेरेंट्स को ही चुना. पेरेंट्स ने आपको नहीं चुना. If I had a choice, then I would not have come. You had a choice in the sense that, see, you have to understand it this way. आप एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कौन से यूनिवर्सिटी में जाता है? कहते हैं मेरी चॉइस है. उसके जिस मार्क्स, जितने मार्क्स आए हैं उसके, जो डिजर्विंग है उसी इंस्टीट्यूट में जाएगा ना वो. Correct? Now he can say, I had all the colleges and all the universities on this planet Earth. Why did I choose to be here? Because that is what you deserve. Why were you born to your parents? That is what you deserve. Why did I have such a horrible upbringing? That is what you deserve. Why I have such a horrible partner? That is what you deserve. तो कर्मा को समझना पड़ेगा. वो तो हो गया. उसके बाद फिर तो first understand, based on the karma, you are a soul playing a role. Similarly, others are also a soul playing a role. अभी तुम यहाँ पे ही पहुंचे हैं. तो हर रोज एक नई सिचुएशन आती है. आपको देखना है आप कौन सा रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे आए हैं. ये सिचुएशन जो आई है इसमें मेरा रोल क्या है? Then accordingly you will respond. Correct? Because that answers some part of your question. Based on your karma, based on your karmic relationship, you are the soul playing a role. So play that role properly with the best of your skill, knowledge, expertise, whatever. And don't blame yourself or others. No regret, no blame, no guilt. Correct? Be an observer first. Observe the situation and then play the role. So that gives you the complete picture of who I am. I am a soul. I am not attached to the body, mind, or situations. But I am here to play a role.
So I will do my best accordingly. Be grateful to God, be happy, and live your life. That is the first part of who am I. And this you have to inquire ongoingly, daily basis. क्योंकि रोज नई सिचुएशन आएगी and then you will say why me. So why me की जगह बोलना try me. I am ready. आ जाओ. जो लाइफ सिचुएशंस आनी है आ जाओ. I am ready. Then you are playing the role. Correct? For example, Amitabh Bachchan in a movie will be a Don. The next movie he will be a Inspector Vijay. So you can't say why me, why am I Don, why am I Inspector? You are a role. You are playing a role. You are Amitabh Bachchan, but right now you are Don. Get my point? So there are life situations and you are playing a role. Remember that. It is all about remembering what you are, who I am. And then playing the role to perfection. चाहे वो डॉन को हो, चाहे वो विक्टिम हो या विलन हो, चाहे वो डॉन हो या इंस्पेक्टर विजय हो. Correct? All right, very good. Let's acknowledge everybody who shared. That will give you some understanding of the first inquiry. And this is an inquiry. Don't look for answers. Dwell in it. Look into your life. See your life situations and then see who am I? मैं हूँ कौन? Then that will give you clarity. That will give you peace of mind. That will give you happiness. And then you will be able to make a So can you contribution give to a all the real others. life example? आप देखिए ना अपनी लाइफ में. Can you give a real life example of checking this? Take your life. Don't look at others' life. Look into your life. आप एक रोल हो, आप एक रोल प्ले कर रहे हो. आप सोल हो, बिल्कुल सोल हो. आप यहाँ पे आए हो, एक कार्मिक रिलेशनशिप है. Now you are playing a role of a mother. You are playing the role of a businesswoman. You are playing the role of a neighbor. You are playing the role of a friend. Correct? ये सारे रोल्स हैं आपके. हर रोल में आपका Yeah. what are you supposed to do? You will decide now. Like Vijay ji said, it's a choice. Now you have a choice of your karma. क्या करोगे अब? First, you have to inquire into what is the life situation, who am I, and then take the appropriate action. Without regret, without blame, without guilt. Making sense? Inquire into your life. Let's have some people share. It will become clear. Yes, Gunjan, you raise your hand. And meanwhile, let me welcome others who are here. एक second. Sir, Gunjan. I can give a very real life situation. Yeah, just a second. Let me अभी just एक दो दिन acknowledge. में ही हुआ है. Gunjan, एक second, Gunjan. Sure. Yeah, yes, So yes. Rajiv, Pushpa Agrawal ji, Baljinder, Harshvardhan, and Shailendra. Okay. Welcome. And whenever you want to share anything, please feel free to do that. Yes, Gunjan, over to you. यस सर 2 दिन पहले ही अभी 30th को ही मेरी बेटी का कॉल आया एंड शी वाज येलिंग एट मी मुझे कुछ नहीं दिया आपने जिंदगी में ये है वो है जो भी करके आई वाज लाइक आप ऐसे हो आप गंदे हो आप ये हो अगर यही पहले वाली गुंजन होती देन आई वुड हैव रिएक्टेड वेरी बैडली और मैंने उसको मतलब ब्लॉक कर देना था 2-3 महीने के लिए मैंने कभी खोलना भी नहीं था शी इज इन कनाडा बट देन थोड़ा सा मैंने डांटा एज अ मदर उसको एंड इमीडिएटली मैंने उसको थोड़ी देर 10 मिनट्स के लिए ब्लॉक किया कि वो थोड़ा सा शांत हो जाए उसको पता चले कि मम्मा की क्या वैल्यू है एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड यू कि सर आई नीड इमरजेंसी हीलिंग फॉर कास्टिंग एंड मैंने भी हीलिंग की एंड थोड़ी देर के बाद ही जब मैं अपने साथ बैठी हूँ एंड आई सेड ओ इट्स जस्ट अ सिचुएशन लेट इट बी ये तो हर रोज का ही काम हो गया कितने साल हो गए मुझे यही देखते और कितने साल मैं इसी साइकिल में रहूंगी कि अनब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक तो जब वो मेरी बेटी है और यू नो आई कैनॉट चेंज इट तो आई ऑन द अदर हैंड आई एम अ हीलर एज वेल तो उसको हील करते हैं ना सिचुएशन को 2 दिन मैं 31st को जब कल रात को बात हुई एंड हैप्पी न्यू ईयर वगैरह हुआ तब भी वो लाइक उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया देन आई टोल्ड माय सन लेट्स गो चल हम तो घूमने चले उसका तो रोज का काम है वो अपने आप संभाल लेगी 24 साल की है तो लेट इट बी तो बस यही है सर यही छोटी छोटी चेंजेस जब हमने करनी स्टार्ट करनी है अपनी जिंदगी में तो हम साइकिल रिपीट नहीं करेंगे अपना आई Very डोंट good, वांट very टू good. रिपीट द सेम साइकिल्स यस
That is Very the good, only Gunjan. thing That's a very I can say. powerful life situation that you have shared, and it takes a lot of Yeah. courage to share from your personal life, Thank right? you. And what is important here is that life situations will give you, you know, pain. पेन तो रहेगा क्योंकि ये कार्मिक है। ना पेन रुकने वाला है ज्यादा देर, ना ही जॉय रुकने वाला है ज्यादा देर। तो कभी खुशी कभी गम, सुना है ना? तो दोनों सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा पहले देखना है, who am I, what is the kind of role I am playing, and then take appropriate action. That is exactly what she has done, right? तो नेगेटिविटी आ जाएगी, कभी कभी थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे, बट देन यू हैव टू क्विकली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इट, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू नो दैट आई एम नॉट माय थॉट, आई एम नॉट माय इमोशन, करेक्ट? आई एम नॉट माय लाइफ सिचुएशन जो हो रहा है, ये लाइफ सिचुएशन है। अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, अच्छा है तो एंजॉय करो, बुरा है तो कोई बात नहीं, देखो क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन लो, एंड दैट्स इट, एंड दैट शुड नॉट डिस्टर्ब यू फॉर टू लॉन्ग। एक बार तो डिस्टर्ब होंगे, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब यू फॉर टू लॉन्ग. So that is the kind of impact that you will have in the life situations when you really understand who I am, and that is the importance of this. वरना वो theory है तो it will not impact your life, but if it is real, if it is practical, then it will impact your life, and that is the importance of this inquiry of who I am. Making sense? So सिमी जी, कुछ clarity मिली? Yes. थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस आएंगी, आपको सिचुएशन में देखना है कैसे डिटैच होके अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। यस, तो सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कई बार कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुम्हें इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो क्लैरिटी और चाहिए ये आपको। बहुत बहुत बार होता है ऐसा। वो क्लैरिटी चाहिए, तो वो वो तब जो आएगा। क्लैरिटी हाँ, वो तब आएगा जैसे गुंजन का लाइफ सिचुएशन ये इजी था, मुश्किल था, करेक्ट? तो औरों का हमको जो देखना है लाइफ, दूसरों का नहीं देखना है, बट देन एवरीबडी इज फेसिंग टाइट सिचुएशंस. It could be, life situations can be very tough and they can be very easy also. But how you deal with it, that is important. अगर आप victim mode में चले गए, फिर कुछ नहीं कर सकते. Then you are invoking the misery and suffering in your life. That will not help. तो who am I की असली inquiry तब है when you get non-attached or detached from your sufferings and misery. You can observe it, you can watch it. Then it will not impact you. Okay? Stay with it. We will discuss more on this later on. So anybody else who wants to share anything on this? Yeah, Shashi ji, I want to add Shalendra Arora. Yeah. May I add one thing? Yeah. Sir, it is a kind of, I suppose, a kind of triggers what we are getting through some emotions. और जैसे गुंजन जी ने अभी अपना शेयर किया एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, this is a triggers to evolve our soul, I suppose, a kind of. Not trigger your soul. It is not to trigger your mind, not to trigger your ego. Ego is a product of mind, right? Because you have to detach yourself from your body and your mind, and then you will be able to think clearly. जब तक आप entangled हो, आप clearly सोच नहीं सकते. First, you have to see, I am not the body, I am not the mind. Now look at your life. So I am a soul playing a role. Now play that role with perfection, with brilliance. Correct? You are a soul. You don't have to trigger a soul. You have to ensure that your mind is not triggered or your ego is not triggered by the life situations. Stay with it. We will have more discussions on this. Yeah. Okay. So let's acknowledge everybody who shared, and we move on to the second query now. Second query is, okay, what could be the second query? Anybody? Who am I? तो पता लग गया, सबसे important है. Why I am here? हाँ? Why I am here? नहीं, वो तो clear. Why I am here? वो तो clear है, वो तो discussion हो गया ना विजय जी के साथ जो बात हुई हमारी. आप एक सोल हो, यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए आए हो, बात खत्म. और बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन यू हैव गॉट योर यूनिवर्सिटी. आप जितने मार्क्स लाए हो उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिल गई है, आपको वहाँ पेरेंट्स के वहाँ पैदा हुए, आपको पार्टनर मिला, उसके साथ शादी हुई, बच्चे मिले, ऐसे ये सब आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से मिले, कार्मिक मार्क्स. हाँ, तो ये तो हो गया आपका.
तो हु एम आई तो क्लियर हो गया, व्हाट आर यू डूइंग हियर भी क्लियर हो गया। यस, पर्पस पे अभी नहीं आएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? थिंक। My subtle object, the व्हाट डू यू subtle मीन बाय दैट? object व्हाट डू यू that मीन बाय दैट? that I'm not. Uh, you said like there is outside gross object hota, subtle object is my thoughts, my emotions, and my feelings. I distinguish like that. So I'm not like a clever person or a conniving person or what I'm not, so that I can distinguish myself what I am. वो तो हु एम आई में आ गया ना, ये तो उसी का पार्ट है। फर्स्ट क्वेरी हो गया, अच्छा अच्छा फर्स्ट इंक्वायरी खत्म ओके हो गया। अब ओके हम सेकंड इंक्वायरी पे आ रहे हैं। देयर आर 3 queries that a seeker should dwell into. So now we are looking into the ओके second inquiry. Second query क्या होनी चाहिए? ठीक है, yeah. So let's look into that. What should be that? सीकर हो आप, आपका आपका पर्पस क्या है, या आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? Anybody? my spiritual journey. Very good. So what do you want to do on that? I want to, I mean, that is my resolution for this year, for doing all that you have taught us in DHV to increase the timings of my meditation, of my healing. Yeah. Everything I So have to do that. correct. So उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? A better human, more attached to the divine, and I'm going to increase my level of consciousness to a higher and become Okay. more happy. Okay, got it. So Joy. let me put it this way. Second query for any true seeker is, how do I focus my mind on my spiritual journey continuously? This is a That's very, it. very Yeah, important question for a seeker. I'll repeat that. yeah, How do I focus my mind on my spiritual journey continuously without getting deviation, without any deviation? That means I'm not correct. deviating from the path of spiritual journey. मेरा focus क्या है? I'm a spiritual being with human experience, but my focus is on my spiritual journey. That also takes care of the question of purpose of life. Who said purpose of life? Tarun, right? Yeah. So as a soul, आपका सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी पे ही फोकस होगा। तो स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस है तो मतलब क्या है? यू आर प्रैक्टिसिंग योर साधना, योर सेवा, योर सत्संग, so that you are recognizing or you are establishing the basic nature of the divinity in you, which is Sat Chit Anand. Yes, we know that. तो भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद, वो आपको इन्वोक करना है अपनी लाइफ में, और उसके लिए साधना, सेवा और सत्संग करना है। करेक्ट? तो ये प्रैक्टिस है। नाउ हाउ डू आई फोकस, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन का आंसर था। क्वेरी क्या है? हाउ डू आई फोकस माई माइंड ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यूसली? माइंड तो भाग जाता है ना, माइंड तो इधर से उधर भाग जाता है। हाउ डू आई फोकस माई माइंड, और अदर हाउ डू आई ट्रेन माई माइंड to enable me to move on the spiritual journey continuously? So you have to understand, as a seeker, आपकी spiritual journey आगे कौन बढ़ाता है? Mind. और आपकी spiritual journey में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है? Mind. So that is actually you can say controversial statement. Spiritual journey में आगे बढ़ने के लिए आपको mind की support चाहिए, और सबसे बड़ा obstacle भी mind ही है। माइंड इज योर मेजर हॉस्पिटल। सारी माया जो है माइंड के थ्रू ही ऑपरेट हो रही है ना, सारी अटैचमेंट माइंड के थ्रू ही आ रही है ना। तो सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे डिविएशंस माइंड की वजह से ही है, और माइंड के बिना आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा भी नहीं सकते। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। सो हाउ डू आई फोकस माई माइंड, हाउ डू आई ट्रेन माई माइंड, सो दैट माई स्पिरिचुअल जर्नी इज कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड एंड नॉट फॉलोइंग बैक? क्या करेंगे इसके लिए? अब सोचिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, माइंड को ट्रेन करने के लिए क्या करना है? Mind controls the senses, right? Meditation, Practice. satsang, and healing. Practice. ओके, प्रैक्टिसेस पे आ गए ना, वो तो आपकी साधना, सेवा, सत्संग हो गया, ये तो मालूम है, ये तो थ्योरेटिकल है ना। उस पे लगातार फोकस करने के लिए क्या करना है?
ये तो मैंने बोल दिया, साधना Sir, we सेवा have to सत्संग करोगे। stop. Sir, we have to stop seeing, watching, listening to all the negative thoughts and जितने भी negativity है हमारे आसपास उसको देखना ही बंद कर दो ओके या सुनना ही बंद कर दो. ओके, वेरी गुड। सो फर्स्ट According to स्टेप, me, I practice this. वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड थिंग। सो सी एवरीबडी विल हैव देयर ओन प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, साधना सेवा सत्संग ये करो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, ये तो थ्योरी है ना। अब होता क्या है, नहीं कर पाते, क्यों? आंखों ने क्या देखा, बहुत बढ़िया पिक्चर सिंघम अगेन आई है, देखेंगे, तो हो गया, 3 घंटे गए, एंड स्पीकर हैज बिकम ए सात्विक से हो गया वो राजसिक, और फिर मूवी देखने के बाद पूरा वायलेंस और पूरा वो खुद सिंघम बन के घूम रहे हो आप, हाँ, 2-4 को पीट दिया, तो क्या होगा, अब आप तामसिक में आ गए। तो माइंड बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम सात्विक, फ्रॉम सत्वा टू राजसिक एंड टू तामसिक। So you have to take care and you have to control your mind so that it is always moving forward. Forward का मतलब क्या है, तामसिक छोड़ दिया, राजसिक छोड़ दिया, सात्विक में आना है। I hope everybody is clear on these 3 gunas, the tamas, the rajas and the sattva. Yes. अब ये करने के लिए क्या करना है, माइंड को कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट स्टेप जो अभी गुंजन ने भी शेयर किया इज कंट्रोलिंग द सेंसेस। आपके 5 सेंसेस जो हैं, जो आपको संसार की तरफ लेके जाते हैं, उनको कंट्रोल करना, देन द माइंड विल बी इन कंट्रोल, क्योंकि सेंसेस विल ड्राइव द माइंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो पहले सेंसेस पे कंट्रोल करो, देन द माइंड विल बी इन सम कंट्रोल, एंड देन द माइंड हैज टू टेक डायरेक्शंस फ्रॉम वेयर। माइंड के ऊपर क्या आता है, मन के ऊपर क्या है? हार्ट। नो, हार्ट बोलते हैं बट मन इज एक्चुअली इमोशन, तो इमोशन इज हार्ट सेंटर। हार्ट सेंटर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? हेलो, आई हैव बीन सेइंग दिस सो मेनी टाइम्स, हीलर्स, वेदांतास, वेदांतिक विजडम, मन के ऊपर क्या है? We have to heal. We have to नहीं, heal. वो तो प्रोसेस है। मन के ऊपर क्या है, मैं बोल, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है आप? थ्रोट जी। थ्रोट, थ्रोट वो अपना थ्रोट चक्र पे काम, माइंड चक्र, थर्ड आई चक्र। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू विल डू एज ए हीलर, बट देन यू शुड नो मन को कंट्रोल करने के लिए कौन है? बुद्धि है, मन के ऊपर बुद्धि है, राइट? थर्ड आई चक्र। hold on, stay with this conversation, okay? See, senses are controlled by the mind is controlled by the buddhi, intellect, और बुद्धि में राग द्वेष अगर होगा तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा। बुद्धि माइंड को तभी कंट्रोल कर सकती है जब उसमें विवेक और वैराग्य जागे, देन बुद्धि कंट्रोल्स द माइंड। व्हेन विवेक और वैराग्य कब जागेगा? व्हेन द बुद्धि जो है आत्मा से यानी कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड है और सोल की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही है। दैट मीन्स द सोल इज अवेक ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी एंड डायरेक्टिंग द बुद्धि। बुद्धि कंट्रोल्स द माइंड, माइंड विल कंट्रोल द सेंसेस। जितने लोगों को याद है वो पिक्चर वेदांता में, हॉर्सेस आर द सेंसेस, द रियंस आर द माइंड, द चैरियटर इज द बुद्धि, and you are sitting in the chariot. Chariot is the body and you are the Atma sitting in the chariot. Remember that? The guys who had just done the Vedanta wisdom part, अभी हमने last Sunday किया। हाँ, तो you should remember that. Mind को control करने के लिए बुद्धि को control, बुद्धि को active करना है, बुद्धि योग। शास्त्रों में कहा गया निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि which is absolutely स्थित प्रज्ञ। एक बार डायलॉग है ना पिक्चर, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, काइंड ऑफ अ थिंग। एक बार बुद्धि ने डिसाइड कर लिया मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, मतलब करनी है, उसके बाद वो अपनी भी नहीं सुनेगा। बीमार हो कुछ हो कोई बात नहीं, हीलिंग करनी है, वेडनेसडे सेशन करना है एंड स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। दैट इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन और द विल पावर दैट यू नीड
That comes when the buddhi is above the mind, not following the mind. बुद्धि में राग द्वेष नहीं, विवेक और वैराग्य होना चाहिए. विवेक is wisdom and vairagya is the power to let go. Let go of anything, everything that deviates you. Then the mind will be focused on moving you in the spiritual journey. Mind then will be your friend. Then mind will take you forward in your spiritual journey. वरना क्या है? Mind can be your villain. Major obstacle in your spiritual journey. कितने लोगों को मालूम है कि माइंड विलन है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का? करना चाहते हैं लेकिन वो करना ही नहीं देता. सुबह उठना चाहते हैं 3:30 बजे, मेडिटेशन करना है, 3:30 छोड़ो 5, वो भी नहीं करने देता. काम है, ऑफिस जाना है, ये है, कैसे होगा, नहीं हो सकता. माइंड विल गिव यू 1001 reasons of not doing it. But once the buddhi is aligned, buddhi says get up and go, and mind will do that. उसको ऑप्शन नहीं देना, इसको बोलते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, निर्विकल्प संकल्प. So these are very powerful words. These can transform your life if you stick to it. Come what may, I will get up in the morning, I will do my sadhana. Now the mind is getting disciplined. The senses will only see what you want to see. Senses will look for that recording which is going to, video recording which is going to transform your life. Not watch Singham again. Correct? So you should be very, very clear how to focus your mind. So this is the second query. So now you have to look into your life and see how you are going to focus your mind so that it allows you to move on your spiritual journey. हर एक के लिए अलग अलग होगा, इसीलिए ये इंक्वायरी है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं. You have to find out your own ways how to focus your mind on your spiritual journey and then make some commitments and follow it. Now January 1st, resolutions. तो सबसे बड़ा रेजोल्यूशन तो यही ले लो कि I will attend all the Wednesday meetings. जितने लोग यहाँ पे हैं, can you take that resolution? Not for me, for your own sake. And in case you are missing it out, you at least catch up on the recording. Recordings are available. But from what I see, number of views, I am very sure not many people are watching it. Right? जितने likes आते हैं, जितने views आते हैं, I know how many people are watching it. So make sure that something is available for you which can move you forward in your spiritual journey. Go ahead and latch on to it. Tame your mind, train your mind, get your mind focused on your spiritual journey. Yes? How many of you are clear on this? So I'm saying my video, it can be anything. It can be any video that you want. No? Could be Shri Ravi Shankar ji, his meditation programs, like Vijay ji said in the morning. Yeah. Could be Sadhguru, could be Shivani ji, could be anybody. Message is important. Messenger is not important. Pick up the message which is going to transform your life. Okay, so that is the second query. We still have some time, so I will move on to the third one. Before that, any questions? Any questions on the second query that we have discussed? So who am I? First query. Second query is, how do I focus my mind on my spiritual journey so that it is progressively moving forward? Correct. Third one. What could be the third one? What could be the third one? And by the way, all these queries have to be real, very, very practical, no concepts, no theory. ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करना चाहिए, वरना ये कोई फायदा नहीं करेगा. Right? Okay, third query. How I can impact the society जो मैंने सीखा है उस चीज को आगे फॉरवर्ड कैसे करूं? मतलब वो क्वेरी नहीं है, वो तो एक्शन है. क्वेरी क्या है? क्वेरी इज समथिंग यू ड्वेल इनटू इट. तो क्वेरी क्या है मैं बता देता हूँ. बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम आई विल नॉट गेट इनटू द डिस्कशन हियर. मूविंग ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी
how do I live in this samsara? How do I live in this samsara where 99% of the population are not following what I am following? समझ रहे हो? आप उस 1% में हो या 0.01% में हो जो स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, अगर आपने पहले दोनों क्वेरी सही ढंग से किए हैं तो. बट 99% ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट फॉलोइंग इट. हाउ डू आई लिव इन दिस संसार? मैं इस संसार में कैसे जीऊं? मूविंग ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी. दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर द स्पिरिचुअल सीकर. ऑफिस में बॉस है, पॉलिटिक्स चल रही है, दुनिया में तो वर्ल्ड में तो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है. हाँ, तो पॉलिटिकल सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, बट इवन इन आवर ऑफिस, इन बिजनेस, लॉट ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ चीटिंग, फ्रॉड, धोखा दे रहे हैं लोग. ये तो डिजिटल फ्रॉड भी बहुत हो गए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, शेयर मार्केट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोलाहल मचा हुआ है. करेक्ट? तो ऐसे वोलाटाइल सिचुएशन में हाउ डू आई लिव इन दिस वर्ल्ड? संसारों को कैसे हैंडल करूं? पड़ोसी मरने मारने के लिए बैठा हुआ है, रोज पार्किंग में लड़ाई होती है. यस. रिश्ते कैसे संभालूं? फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, इश्यूज. करेक्ट? तो व्हेन यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड and I am focusing on my spiritual journey, how do I live in this samsara? This is very, very important for you, and I'm talking you because individually you have to sort out this. स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर रहे हो, संसार में कैसे जीना है. How do you live that? So you continue from where you left in the first query. I am a soul playing a role. That will be the starting point. Now you see how you have to best interact with the world. Making sense? So let's have some people share. आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है? How will you interact with the outside world? टाइम थोड़ा कम है, इसलिए you can consider this as a homework, but then anybody who wants to share right now can share that. Yes, Vijay ji. Follow the path of dharma and be an observer and निष्काम वे से वर्क करो. Okay, very good. That works for you. Go ahead. Anybody else? Follow your dharma. That means follow your duty. अपने कर्तव्य का पालन करो. रोल को देखो, अपने कर्तव्य का पालन करो. And go ahead. Full throttle with full self-belief. Very good. Think about it. Think about it. Inquire. And let's have some more people share. अगर कोई कुछ बुरा कर भी रहा है, पड़ोसी हो या बच्चे हो या कोई भी हो आपकी लाइफ में, सेकंड पर्सन, हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो भी तो एक सोल है जो रोल प्ले कर रहा है. Very good. एंड वो अगर हमारे को ट्रिगर कर रहा है तो दैट मीन्स वो भी हमारे बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ करेगा. वो ट्रिगर ही हमारी ग्रोथ करेगा. Okay. Good. Anybody else who wants to share? Ignore to the best of your capability what other person is doing so that it doesn't affect you. Okay. Try Now, to as ignore. I said, this is an inquiry which all of you have I to can solve think for of that. yourself. है ना? हाँ आप जी. सबको अपनी लाइफ के लिए देखते हुए ये आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपका संसार अलग है. Correct. See, Yeah. we are all at the soul level, we are all one. We can say that. But as a jiva, we are all different. We are all unique. है ना? मेरी लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है विजय जी के साथ, विजय जी की डिफरेंट है गुंजन के साथ. सो वी आर ऑल, वी कैन नॉट लिव अदर्स लाइफ. सो वी आर सेपरेट. ये मानना पड़ेगा आपको. वी आर डिफरेंट at the body level. At the jiva level, we are different. Correct. We are unique. Soul level, we may be one. That is a concept, possibly, but it has to be real when you dwell into these inquiries. Okay. So this is where I would like to leave you all. Inquire into these three. We will have more discussions maybe next week. Till then, Aham Brahmasmi.
Enjoy. Take care. All the best. Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Take care. Good night. Bye bye.